हेलो एवरीवन, आई होप आपका एमवीवीपी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेट्स डिस्कस द बायो पोर्शन। राइट, सो बायो पोर्शन बच्चे आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 127 से, एंड इट्स अ वेरी सिंपल वन। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। एज आई नो, वी नो दैट राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, chromosomes they are hereditary, right? They are controlling the genetic things. Mitochondria, they are known as the powerhouse of the cell. Now the fourth one, the option is correct answer is the fourth one, lysosomes, as they are known as the suicidal bags, and they are also known as the waste disposal system. So the correct answer will be fourth one, that is lysosomes. Coming to the next question, the next one is which of the following is a correct option, right? You have to tell the correct sequence, right? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका टेक्सोनॉमी से है बच्चे। इसका एक आपको बहुत अच्छा निमोनिक्स लर्न होना चाहिए, दैट इज किंग प्रिफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच, राइट? सो K for kingdom, P for phylum, C for class, order, then family, then genus and species. So आपको सिंपल से दिखाई देगा, द करेक्ट सीक्वेंस इज किंगडम, देन क्लास, देन फैमिली, देन स्पीशीज. So the correct answer is question your option 1, that is kingdom, class, family and species. Yes. Now the question number 129, which of the following is or are true for parenchymal tissue? Your parenchymal tissue, parenchyma is basically parenchyma, right? There are types of parenchyma. Okay, so yes, we know that they have air space, they have air cavity, so they are present in aquatic plants, right? Perfect. They are made of parenchymal tissue, perfect. They help in floating, perfect. Provide hardness, no. As we know that who is responsible for hardness? Your sclerenchymal tissue, right? So the option number 1, that is 1, 2 and 3 is correct. Okay, now the next one, yes, your mackerel, tuna, sardine and Bombay ducks, they are type of, yes, ये direct answer है बच्चे, they are marine fishes, right? Simple है, आपको options दिए हैं and they all belongs to marine fishes. Yes. Now notochord is present in the tail of dash larva. We know that बच्चे आपका ये इसका आंसर होना चाहिए प्रोटोकॉर्डाटा, एंड प्रोटोकॉर्डाटा का एक ही आपको इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज हर्डमानिया. So option 2 will be correct, that is herdmania. Yes. Now 132, Q10 is what? Is present in plants, we know that, and it also act as your chemical substance with waterproof activities. So answer will be both A and B, both 1 and 2, right? ये आपका प्लांट की कोटिंग पे भी प्रेजेंट होता है, द शाइनी मटेरियल, एंड ऑल्सो इट इज वाटरप्रूफ. 133, a very famous quote given by Rudolf Virchow. It means your cells arise from the pre-existing cells. ये हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं. It is not difficult at all. Direct question, simple one. Next is, which of the following lack vascular tissue? Interesting question. As we know that your cycas and pinus, they belongs to which group? Right? ये plant में कहाँ से belong करते हैं? They are gymnosperms, right? Now fern is what? Now we are left with option number 3 and 4. Ferns are what बच्चे? They are pteridophyta, and we know that pteridophyta, they are first vascular plants. तो ये वाला option भी आपको खत्म हो जाता है. We are left with richa, and richa is thallophyta, and thallophyta, they lack vascular system. So answer will be richa, right? Now the next one is commercial cork. इसका सिंपल एग्जाम्पल है बच्चे, योर फेलोजन इज अ कमर्शियल कॉर्क अवेलेबल इन द मार्केट, एज दे आर वाटर प्रूफ, दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, राइट? दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनालिड? बच्चे सिंपल सा बात है, आपको सिंपल फोर्थ वन, इट्स अ इंसेक्ट. बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ कॉकरोच का एक आपका फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज पेरीप्लैनेटा. ओके, इट्स अ इंसेक्ट. बाकी सब आपका क्या है? एनालिड्स. गिरोडीना मीन्स आपका इट्स अ लीच. ओके, यस. नाउ द कार्लवूस. कार्लवूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम डे 1 से आपको बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी मैंने आपको बताया था
3 डोमेन क्लासिफिकेशन आता है या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, आपके माइंड में आना चाहिए कार्ल रूस। वाई? क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया था एज आर्केबैक्टर एंड यूबैक्टर, राइट? तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर आपको कभी भी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आता है, राइट? तो करेक्ट आंसर विल बी आर्केबैक्टर एंड यूबैक्टर। सो ऑप्शन नंबर 2। Okay, now redwood tree, Ciconia belongs to, they are the tallest tree, they are the largest tree, and they belongs to gymnosperms. Question number, your option number 1. Yes. Which of the following is not a bacterial disease? Okay, as we know, bacterial disease, TB bacterial disease, anthrax bacterial disease, influenza, it is caused by virus. So correct option will be 4th one. Okay, now the last and the very easiest one, your smoke is combination of your smoke and fog. We know that it is a secondary pollutant, right? And it is formed by combining your smoke and fog. Thank you so much everyone.